So today we will be solving the remaining questions for the GATE 2025 examinations, and after that I'll tell you some more tricks and tricks कि कैसे आप लोग GATE के questions को solve कर सकते हो अच्छे से, and जो भी और MCQs हैं आपके उसमें आप लोग efficiency कैसे increase कर सकते हो, and how can you increase your hit percentage, which is basically if you are attempting some questions, how you can maximize your chances to make them correct for the most of the times, right? तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन. एंड अब लाइक आई एम अज्यूमिंग कि मेरी वॉइस ठीक आ रही होगी, लाउड एंड क्लियर, राइट? कैन समवन कंफर्म माय वॉइस इज क्लियर? यू कैन जस्ट कमेंट इट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके, चलो फिर शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, है ना? ओके. कंफाउंडिंग वेरिएबल, हाई इंटरनल वैलिडिटी, हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, प्लेसिबो इफेक्ट. सो प्लेसिबो सबसे सिंपल आता है, राइट? आई एम नॉट सेइंग बाकी टफ है, बट प्लेसिबो इज लाइक सबको पता रहता है. सो लेट्स सी कि प्लेसिबो का क्या आंसर हो सकता है. Okay, results of study generalized participants improve their performance because of the expectation of receiving. हाँ, correct. This could be the relation, है ना? S का 3. Is there anyone S3? No, है ना? So बाकियों को मिलाने की जरूरत ही नहीं है. You can go with option number A, right? P का second, confounding is second. Presence of an uncontrolled variable that creates uncertainty as to whether dependent variable was influenced by independent variable, है ना? थोड़ा सा confusion create करता है because it will affect both the things. फिर हाई इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर वन. वी कैन ड्रॉ क्लियर कॉजुअल रिलेशनशिप और कंक्लूजन्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट. इंटरनल वैलिडिटी काफी अच्छी होती है, तो आपको इस तरह से बाकी चीजों को मिलाने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन ओनली मैच द वन ऑप्शन एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, assertion reasoning. Don't worry for the students who are the part of foundation batch and विजेता बैच. कल आपकी क्लास होगी आप पे जिसमें हम लोग assertion reasoning को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो assertion reasoning को सॉल्व करने का बेसिक फंडा होता है बिकॉज करके रीड करो, और फर्स्ट थिंग आपको दोनों सेंटेंस पता होने चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट, है ना? तभी assertion reasoning सॉल्व होगा. देयर इज नो अदर ट्रिक. क्लियर? So, factor analysis reduces large number of variables into smaller number. Correct? The measures within each cluster are highly interconnected and reflect the same underlying dimensions. Correct. So these both statements are correct because factor analysis is a technique जहाँ पे आप लोग variables को reduce करते हो. Right. This is a variable reduction technique in which you form so many dimensions, and in every dimension the variables will be correlated to each other. Option number C is the right answer. ठीक है? Okay. Just a second. So from where I can download GATE paper 2025? GATE paper, those who have given the GATE examination paper, they can download it. Otherwise, you can join my Telegram group. Its name is, I'll tell you the exact name. ठीक है? Just a second. मैं उस ग्रुप का लिंक ना लाइव चैट के थ्रू कमेंट कर दे रहा हूँ. So you can just join it right here. Clear? Just a second. So in this group, you can communicate with me directly. I'll keep on sharing the resources and other stuff, and you can like also talk to me if you have any confusion regarding your preparation, all those things. So that's a group made by me only. So yeah, so I've sent a link with the name of Layman Psychology. That's my own personal account. Okay, I hope it's visible, right? Okay. Otherwise, जिनके लिए link click नहीं हो रहा है, you can search CVT PG Psychology 2025 anecdotes for psychology. ठीक है? This is the group name CVT 2025 Psychology in bracket anecdotes for psychology. Clear? So this is the group. You can join it. All right. इसमें CVT PG के भी मिल जाएंगे previous years के. You will get everything. ठीक है? Most of the चीजें मैंने already share कर रखी हैं. I've made a lot of quizzes for the MCQ part, which are topic based. So you can join the Telegram group and you can access everything, right? And for the people who like face confusions, right? कि इसका आंसर क्या होगा, इसकी का आंसर क्या होगा, you can discuss it in the group itself. That's like a peer competition. Okay. Question 54. Dash is a perspective as the first force and third force. बहुत basic question होता है, कई बार confusion होती है, right? Just remember, first is psychodynamic, ठीक है? Second is behaviorism, and third is humanism, right? So first is psychodynamic, right? Second is behaviorism, third is humanistic.
तो फर्स्ट एंड थर्ड पूछा है साइकोडायनामिक एंड ह्यूमरिस्टिक. क्लियर? ओके, वंडरफुल. इन लैंग्वेज, हाँ, इन लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? क्या होगा इसका आंसर? एनी आइडिया? क्वेश्चन नंबर 55. सॉरी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? दैट्स एन एमएसक्यू, है ना? एमएसक्यू है ये. लेट्स रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट. The ability to distinguish speech from non-speech sound is likely to develop before the age of 3 months. That is correct. ठीक है. हालांकि इस तरह के questions generally person cannot prepare. Like logic, so there is no logic. You have to remember some statements, remember some concepts. Only then you can answer it. So these type of question, if you are not able to practice it or if you are not able to solve them, है ना? तो इतना stress नहीं लेना खुद पे. इस तरह के questions जनरली अगर पूछे जाते हैं तो यू कैन गेस कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट देम रॉन्ग ओनली. क्लियर? ओके, सो ए इज करेक्ट. द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग इज लाइकली डेवलप बिफोर द एज ऑफ 7. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. Babbling is not likely to develop before the age of 6. ये भी गलत हो सकता है. Let's see the other statement. The ability to use single word is not likely to begin before the age of 10 months. So 10 months का थोड़ा सा एक रिस्की वाला ऑप्शन आता है. But again we can say कि कुछ एक्सटेंट तक डेवलप हो जाता है. तो we'll go with option D only. So it is not very likely, but हाँ, in some cases you will see कि जो वन वर्ड स्टेज होती है, that is like follow फिर स्टेज, वो 10 मंथ्स के तक डेवलप हो जाती है. तो विल गो विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड डी, दैट इज करेक्ट. ठीक है. ओके. एमएसक्यू में प्रॉब्लम ये होती है, इफ यू हैव आंसर्ड ऑल द करेक्ट आंसर्स इन द ऑप्शंस देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. ये नहीं है कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 आर करेक्ट एंड आपने 2 ही टिक किया तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना? सारे करेक्ट है तभी आपको आंसर मिलेगा. प्रोजेक्टिव टेक्निक वुड नॉट बी इंटरेस्ट टू विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी थ्योरिस्ट? सो प्रोजेक्टिव थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसके लिए होगी? साइकोडायनामिक के लिए, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट. सो ह्यूमनिस्टिक विल नॉट बॉदर, cognitive will not give the attention, trait will not give the attention, right? Because projective personality test is always related to psychodynamic. Clear? So it will be A, B, and C correct answer. Projective tests are basically those tests which expresses some unconscious memories, some unconscious emotions. So these are known as projective tests. Which of the following is our characteristics of type A personality? Right? Type A personality पूछा गया है. So ambitious होते हैं, competitive, yes. Time conscious, yes. Laid back, no. This is type B. Laid back attitude type B का अंदर होता है. So A, B, C are the correct answer. Correct? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी आर कैंसर प्रोन, टाइप डी आर डिप्रेशन प्रोन. ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओके. Which of the following is our sources of variability that contributes to error in measurement of estimating reliability? So sources of error, variability किस तरह से काम करेगा यहाँ पे? Any idea? Let's see the options. Reactivity carry over, true, change over time. So reactivity carry over का मतलब होता है basically that you have a practice effect sum. So this is a error. ये एक error में count होता है, right? फिर making incorrect predictions or decision about the individuals. ये validity का concept होगा. Prediction, assuming predictive validity. It is not related to as such reliability. ठीक है? तो ये नहीं होगा. Then inconsistency of test content non-parallel halves. Could be consistency of test items. तो ये तो अच्छी चीज हो गई. This could be not there. So option number A and option C are the correct answer. MSQ है, ठीक है? Multiple select answer. Clear? Do we need to fill separate forms for getting admissions into IITs after clearing gate cutoff? Okay, Arshita, very good question. See, gate exam is just the eligibility exam, right? So people think that I've qualified gate तो मेरा IIT में admission हो जाएगा. No, you are now eligible to be like for sitting in the interviews or some exam which was conducted by IIT.
So even if you have qualified the exam, this is not like this does not mean कि आपका किसी भी IIT में selection हो जाएगा या हो गया है, right? This does not mean at all. So what you do, you will look for the different IITs and IM like जो कि आपका मास्टर्स करा रहे हैं साइकोलॉजी में, there are very few, and then you will wait for the opportunities. You will see their form, their academic calendar, so they will release the form. They may take some independent own exam, which could be objective and subjective. Then on the basis of that, you will be selected for the interview. After interviewing round, you will be called upon for the research proposal size something, right? Or they will ask you to write a research proposal in 100 words, in 200 words. These types of exam they conduct, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, but ऐसा frequently होता है. Then on the basis of that and after interview, then you will be getting selected to a specific IIT. तो गेट तो बस एक एलिजिबिलिटी होती है, राइट? इट डज नॉट मीन कि आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाएगा. ठीक है. चल. द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड सेम गोस विद जेआरएफ, है ना? जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा. नो, राइट? यू हैव टू सिट फॉर द इंटरव्यूज, यू हैव टू गेट सेलेक्टेड. द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच to therapy would be least effective in treating which of the following conditions? MSQ, right? Schizophrenia is very hard. No. Mild depression could be. Paranoia, no. Child abuse could be. So humanistic therapies can be used for mild depression, can be used for childhood abuse, but they cannot treat schizophrenia and paranoia. So it is A and C. Clear? Correct. Characteristic features of an aptitude test is, बताओ क्या होगा इसका आंसर? Characteristic feature of an aptitude test is A. Evaluate the effect of unknown, uncontrolled set of experiences. Okay. Rely heavily on content validation process. Okay. Evaluate the potential to profit from training. Okay. Evaluate the outcome of the training. Right. So key में इसका आंसर दिया हुआ है A and C. Right. बट व्हाट आई थिंक कि इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सम नोन एंड कंट्रोल्ड सेट ऑफ एक्सपीरियंस, इफ यू नो फिजिक्स, इफ यू नो मैथमेटिक्स, if you know psychology, and you have given some aptitude test, and based on these known variables, known measures, if you will perform better in the examinations of this subject, we will say that the aptitude test was good actually, है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे known ये ऑप्शंस गलत है, right? What I feel is option number B, because they rely on content validation process, because aptitude tests need to be like validated for their content. They should be measuring the same exact construct what they intend to measure. तो content validation के पास अच्छा होना चाहिए. Then the aptitude exam purpose is to somewhat get profit from the training, not in terms of money always. Profit in terms of that you should be feeling more confident, more knowledgeable after knowing that for this aptitude you have, for this specific subject you have the aptitude, and if you will take the training, so you will be benefited out of that. So option number C is also right. Again, evaluate the outcome of the training. Obviously, अगर आपको बोला है कि साइकोलॉजी आपका एप्टीट्यूड है and you will get the training for the psychology, get the coaching for the psychology, and if your outcome is good in terms of कि आपके नंबर अच्छा आ रहे हैं एग्जाम में, right? So this will like also a feature of characteristic of aptitude test. So according to me, it will be B, C, and D. It is not A and C. So that's my call. एक बार टॉप डाउन ऑपरेशन बॉटम अप समझा दीजिए. समझा देता हूँ. सीवीटी में एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं. नो, सीयूवीटी इज ओनली ऑफ एमएसक्यू. सीयूवीटी में सिर्फ एमसीक्यू होता है, आपका एमएसक्यू नहीं होता है. क्लियर? गेट एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न सीवीटी के पैटर्न से डिफरेंट ही होगा ना सर? हाँ, ऑब्वियसली. सीयूईटी इज ओनली अबाउट एमसीक्यू. सिंपल, है ना? गेट का पैटर्न अलग होता है, बट अगेन आई एम नॉट हियर फॉर द पैटर्न, है ना? मैं कंसेप्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ. एंड यू शुड ऑल्सो सॉल्व दिस पेपर नॉट फॉर द पैटर्न इटसेल्फ, है ना? अगर आपको टॉपिक ही नहीं आता है, इट इज नॉट वेरी, इट इज हार्ड टू सॉल्व एमएसक्यूज, राइट? आपको मल्टीपल चीज सॉल्व करनी पड़ती है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू आर नॉट able to understand the concept like very thoroughly, and you are not able to tick the correct answers, it means there is a lag in your preparation, right? Even though MSQ वाले questions आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, but then again also
आपको प्रिपेयर तो करना ही चीजों को, ठीक है। तो टॉप डाउन बॉटम अप, नोटेड, आई विल टेल यू आफ्टर दिस, क्लियर, समझा दूंगा मैं भी। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट आर और इज illusions? Erroneous perceptions, basically errorful perceptions. Correct. Schemas, no, they are not illusions. They are mental representations of some event. Perceptual constancies, no. Incorrect perceptual hypothesis, yes. So option number A and D are most suitable to illusions. Clear? Okay. ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है पूरा, सो आई नॉट कैलकुलेट कंप्लीटली, आई टेल यू द प्रोसेस, है ना। कि व्हाट इफ एग्जाम में आपका आ गया कि मीन निकालो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, देयर इज अ वेरी लेस चांस, बट व्हाट इफ आ गया, राइट। सो मीन का फॉर्मूला यू नो, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल मेंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ elements. Right? This is the formula of mean. So if you want to calculate the mean of column 1, so you will go like this. 12 plus 12 plus 11 up to 8 plus 8 सबको जोड़ लिया and count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divided by 10. This will be your mean. Clear? And same आप इसका भी ऐसे निकालोगे. Then what you will do? You will make some column. है ना, आपने मीन तो निकाल लिया यहाँ पे. Now you will make some columns. कैसे? देखो, you will make some columns. One column will be your x minus m का column. X means your raw score. 12, 12, 11, 10, 9. These are your raw scores. X, right? M is your mean, जो आपने calculate किया. One column will be like this. Then you will actually square the values. So suppose करते हैं इसका mean आया 10. I'm just taking an example, है ना? सो 12 माइनस 10, यहाँ कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर लिखना है, सो 4. फिर 12 माइनस 10 अगेन कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4. तो इस तरह से करके आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखने हैं. देन यू हैव टू ऐड एवरीथिंग. क्लियर? नाउ आफ्टर एडिंग you have to use one formula, and that is SD equals to summation of x minus m whole square upon n minus 1 total का under root. This is the formula for standard deviation. Clear? So with this formula, you can put directly the value of this thing. सबको ऐड कर लोगे, आपको सीधे ऊपर वैल्यू मिल जाएगी. n is the sample size, clear, which is 10. तो 10 minus 1, 9 से डिवाइड करोगे. y minus 1, this is known as Bessel's correction. Clear? Most of you ask this question कि सर कब हमें -1 यूज करना है, कब नहीं करना है. Don't worry. Either you can use it or don't use it. There is no very much significant difference in -1, right? This is just a correction factor. Call it as Bessel's correction. ठीक है? This is the formula. Very least likely because in GATE you have, I think जहां तक मुझे याद है, like screen calculator allow होता है. When I gave, I think उस टाइम पे था, मुझे exactly याद नहीं है, but I think screen calculator is allowed for the GATE examination. But CBT में ऐसा कुछ नहीं होता है, right? So there is a very least chance कि वो standard deviation calculate करके भेजेंगे because there is a question of what under root. So even if there is a question to calculate standard deviation, just understand whatever value it will be like very easy to take it under square root, है ना? Maybe 25, maybe you can say 625, है ना? Maybe 144. इस तरह की वैल्यूज होंगी जिनका आपका स्क्वायर रूट सीधे डायरेक्ट होगा. क्लियर? चलो, तो इसको आप लोग सॉल्व करें ना एंड बताना क्या है. So it's called ANOVA. नहीं, this is not ANOVA. This is standard deviation. ANOVA is a different thing, है ना? ANOVA तो दूसरी चीज होती है. ANOVA is a statistical technique in which if you have one independent variable and it has been divided into so many different levels, then you will use ANOVA. If you have one IV and it is only divided into two levels, है ना? Then you will t-test. Clear? Okay. Which of the following is are true for the conformity? Conformity के लिए क्या क्या statement correct है? Size influences conformity only up to a certain level. Correct. Research has shown 4 to 7 people. Size always influences conformity. Always वाले statements ज्यादातर केस में wrong होते हैं. Those are just trick. है ना? Extreme statements are often wrong.
है ना, often. Group unanimity influences conformity. Obviously, Shepard का experience आप लोगों को पता होगा. Then status does not have any influence on conformity. No. So A and C are the correct answer. ठीक है? Okay. Then the probability of type 1 error is 0.05. The maximum acceptable probability of type 2 error is 0.20. The researcher is willing to accept that type 1 error is dash times more serious than type 2. आई एम अफ्रेड कि इसका आंसर भी की में गलत हुआ है. की में इसका आंसर समथिंग 4 to 4 दिया है. आई डोंट नो कहां से कैलकुलेशन आया. व्हाट फॉर्मूला आई नो इज बेसिकली यू डिवाइड अल्फा बाई बीटा. सिंपल. इफ यू डिवाइड इट 0.05 and 0.02, it was something like 2.5. ऐसा कुछ आएगा. Right. So according to me, the answer should be 2.5. What does this basically means? Researcher is giving importance to type 1 error 2.5 times more than type 2 error. है ना? You know, for a researcher, it is necessary to balance both type 1 error and type 2 error. But again, किसी ना किसी को हल्की सी priority ज्यादा देनी पड़ती है. So this formula actually tells you that which error you are giving more importance. So here, type 1 error is getting more importance than type 2 error. By how much? By 2.5 times. So इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 2.5 आना चाहिए. Let's wait for the answer keys. These types of question will be asked. जिसमें देखो will be का कोई आंसर नहीं होता है, राइट? मैं भी एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ ऑब्वियसली, सो आई डोंट नो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे. बट आई कैन टेल यू कि आज तक ऐसा पूछा गया नहीं है ना? सो विल बी आई एम नॉट श्योर. बट टिल दिस टाइम, like have they asked this type of questions? Answer is no. इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है. Clear? So I hope you got the answer. Okay. Last question. This was a very easy question. I remember विजेता बैच में, एमसीक्यू बैच में हम लोग परसों ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन हमने, आई थिंक 20-15 प्लस क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए हैं. क्लियर? हाँ एग्जैक्टली, अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं. So there is a person, उसका सोनी. So there is this girl, इसका IQ 115 है, right? 115 is here. Question is, what percentage of population will have intelligence score higher than the score obtained by Sony? So जो विजेता आज के मेरे स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम लोग से. बताओ क्या होगा इसका आंसर? 115 यहाँ पे है. दे मेड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजी. सोचो अगर एनपीसी ग्राफ नहीं दिया होता तब ये अच्छा क्वेश्चन होता. दे हैव गिवन यू द आंसर. आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है ना? क्लास सेकंड की मैथमेटिक्स लगानी है तो ऐड द वैल्यूज, राइट? अगर ये एनपीसी नहीं दिया होता, एंड रिमेंबर सीवीटी में एनपीसी नहीं देते, सीवीटी में दे विल गिव यू जस्ट दिस मच. कुछ ग्राफ आप नहीं मिलेगा, ये ग्राफ नहीं रहेगा सीवीटी में, राइट? दे विल गिव यू जस्ट दिस मच एंड कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. अगेन इट इज नॉट इजी, है ना? विदाउट ग्राफ. क्या लगता है इजी नहीं होगा? इट इज एक्चुअली प्रीटी इजी. क्या करना है आपको? 115 को लोकेट करना है. इट इज एट वन स्टैंडर्ड deviation. Am I right? 115 is placed at one standard deviation. How many standard deviations are above this? This one, this one, this one. Added 13 plus 2. It will be roughly 15 point something. Answer भी इतना ही आ रहा है. Clear? हाँ, correct. ठीक, ऐसे ही कैलकुलेट करना आपको एग्जाम में. Clear? So this was all for gate paper, right? अब चीजें क्लियर होंगी आप लोग को. And now you are confident, somewhat confident with the MCQs. And if you're not, don't worry. हम लोग अभी ऐसी और भी क्लासेस लाने वाले हैं रोज, जहाँ पे हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे. And if you wanna get more in-depth analysis and like 1500 plus MCQs with analysis, with answer key, and specifically 400 questions around of the research, these kinds of questions, so you can join my Vijeta batch. Alright? अच्छा, अब important चीज देखो, right? On the other hand, bottom of processing is more focused on stimulus, right? Environment, और क्या यूज कर सकते हैं? मोर इकोलॉजिकल, ये सब. क्लियर? हाँ नहीं वही बता रहा हूँ, राइट? सो व्हाट डू यू सी?
Top-down processing is basically when you analyze or perceive some stimulus with the help of experience you have, with the help of knowledge you have, with the help of memory you have, right? You recognize your friend in a crowded market. आपने अपने दोस्त को पहचान लिया क्यों? Because you know how your friend looks like. आपको पता है ये सब टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, right? Bottom up processing is more like the stimulus driven, right? You try to perceive the stimulus in terms of the information which you get from the surrounding, which you get from the sensory receptors, which you get from the stimulus itself. Jesse, if you are seeing something novel, very unique for the first time, so you don't have anything related to that. What stimulus? You don't have any memory, you don't have any experience, you don't have any knowledge about that. You are seeing that stimulus for the very first time. It could be any unique random car, it could be any unique random food, right? So whatever perceptions you go with that, you will always try to look for the stimulus itself, है ना? कि थोड़ा सा red color का है, maybe this food is spicy. It is like some sugar on like top of it, so maybe it is somewhat spicy and sweet, है ना? इस तरह का आप inferences draw करते हो. This is more like a bottom up processing. Clear? एक बुक मंगाई है मैंने, एनटीए सीबीटी पीजी क्वेश्चन बैंक फॉर साइकोलॉजी. इस बुक में कुछ 2000 क्वेश्चंस हैं, पर आई थिंक दिस इज नॉट सो गुड क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है. See, ऋषि, आई एम नॉट श्योर कि बेसिक का आपको मतलब क्या है. हु नोस, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होगी, दैट्स व्हाई यू थिंक क्वेश्चंस आर बेसिक. सो इफ इट इज लाइक कलेक्शन ऑफ सीबीटी साइकोलॉजी पेपर्स, तो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे. इफ यू विल टेक 2000 क्वेश्चंस, so हार्डली 100 क्वेश्चंस होंगे जो टफ होंगे, राइट? 1800 to 1900 क्वेश्चंस विल बी इजी ओनली. सो आई डोंट थिंक सो कि बुक गलत है, बुक इज करेक्ट, ठीक है. पॉइंट इज कि जैसा मैंने कल के क्लास में बताया था कि फ्रॉम द लास्ट 2-3 years देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट साइकोलॉजी for which paper is very easy. बहुत easy paper आ रहा है. For other subjects, paper is like way more tougher than the psychology. So there is a very high chance in the coming 2 or 3 years they will revamp this pattern. तो chances हैं कि इस बार हो सकता है कि psychology का टफ पेपर आ जाए. टफ इन द सेंस बाकी कंपैरिजन में टफ है पेपर, राइट? बिकॉज 2 साल से ये बहुत ज्यादा पेपर इजी आ रहा है, एंड देयर इज सम स्टेटस ऑफ एनटीए, तो उसको अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, राइट? How much should we aim in the mocks for CVT? Numbers के basis मत जाओ. Try to measure your preparation on the basis of questions you solve. So out of 75, at least try to solve more than 60 questions. Solve means correct. At least try to correct more than 60 questions. ये आपका aim होना चाहिए. Clear? And again, there is no guarantee and this is not possible कि आपको किसी भी टेस्ट में हर एक टॉपिक आए. This question was asked by one of my students today. So I said this thing to that person only also. He, even in the exam day also, right? You will see out of 75 questions, there are 2-3 questions which you are not able to answer. It is very like normal thing, and I do not expect too much or do not over expect from yourself, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे questions आपको आते रहें. It's not possible. Clear? So there will be a chance of error. So आपको maximum के साथ जाना है, perfect नहीं होना है. Clear? 24 का पेपर was too easy, correct. Okay. So I've attended all CVT, PG, MCQ वाले classes, but I feel like it's not your problem issue actually. सभी की ये problem होती है कि they are doing everything best, है ना? मैं इतने सारे students को mentor कर रहा हूँ, and every day at least 10 queries I get कि सर मैंने ये चीजें कर ली हैं, tell me something more I can do, है ना? And I'll say them the exact same thing which I'm going to repeat here also. Just keep repeating whatever you are doing. अभी कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है. I understand आपको एक पेपर सॉल्व करने में 2-3 बार ज्यादा बोर फील होता होगा, राइट? कि आप कुछ न्यू स्टिमुलस नहीं मिल रहा है. बट एटलीस्ट व्हाट आई डिड बेसिकली, मैं अपने से बेस्ट एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ, राइट? सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस पेपर्स ऑफ डीयू, बीएचयू, ऑल दोस थिंग्स at least 7 to 8 times. Like I practiced them to a level where I was just reading the question and without seeing options, I was able to answer that. है ना? But the problem is people ask, इतना प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है ना? वो क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है. फेयर इनफ, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं आएगा. But that's how I train my brain. That's how I developed some neural pathways so that whenever there is an MCQ question, my brain will not wander here and there, right? It will be straightforward, arrow-like focus towards the question only.
तो ये तभी होता है जब आप बार बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. इट इज नॉट नेसेसरली पॉसिबल कि हर बार नया क्वेश्चन हो. ट्राई टू सॉल्व व्हाटएवर यू क्वेश्चंस हैव एटलीस्ट 3 to 4 times, है ना, इतना करो. ठीक है. चलो, और किसी को कोई डाउट है? Tomorrow we'll see you again at the same time 3:30 p.m. and we'll take some new questions for psychology. Any more doubts? All right. Sure. See you soon tomorrow. And people who are willing to join the CVT MCQ series batch, it is going to be ending tomorrow. But don't worry, सारे के सारे जो क्लासेस हैं वो आपके अप्रैल तक अवेलेबल रहेंगे. रिकॉर्डिंग्स, कंटेंट, MCQ PDF. So there are 1500 plus MCQs. Everything will be there, and again I'll be there, right? So see you soon in the batch and see you soon tomorrow in the YouTube.